Hello everyone, good evening and welcome to Matrix Digilearn. Matrix Digilearn को आपण मान को स्वागत। हमरो जो 100 MCQ सीरीज चल रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो दैट इज इट्स सेकंड पार्ट। एटा होजे हमर सेकंड पार्ट। या पूर्व फर्स्ट पार्ट जो मन देखि नांती से माने डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि से मन देखे फर्स्ट पार्ट देखि परिबे। एंड सेकंड पार्ट रे जोडा हमें हला 50 क्वेश्चन हला फर्स्ट पार्ट रे डिस्कशन करथलो। और सेकंड पार्ट रे आउ 50 क्वेश्चन डिस्कशन करबो। एंड यार सहित हमरा 100 जो MCQ रो जो सीरीज थिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ता कंप्लीट होबो। ठीक अछि। तो समस्त मत फटाफट कमेंट कर दियंतु समस्त को वॉइस प्रॉपर्ली ऑडिबल हो जाए देन वी विल स्टार्ट द सेशन। ओके समस्त को वॉइस क्लियर होची। ओके ऑल ओके ठीक अछि जीवा स्टार्ट करियो सेशन। ठीक अछि। बिफोर आई स्टार्ट मैं आपन कहबा चाहबी कि आपन मैट्रिक्स डिजिटल लाइव आपको डाउनलोड करके घरे बसी प्रॉपर्ली प्रिपरेशन कर परिबे। सेति पई आपन को करबा को हबो कोन ना आपन को सबटो प्रथमे जिबा को हबो गूगल प्ले स्टोर। एंड गूगल प्ले स्टोर रे आपन को सर्च करिया को हबो मैट्रिक्स डिजिटल लाइव। एंड मैट्रिक्स डिजिटल लाइव आपन जतबेले सर्च करिवे सेतबेले कोन हबो ना आपन को हला जो ए जो लोगो आपन देखुछन ए लोगोटी आपन को विजिबल है। ठीक अछि। ए लोगोटी जतबेले आपन को विजिबल है जिवो से बटन अछि से इंस्टॉल बटन ऊपर क्लिक कर देबे। इंस्टॉल बटन ऊपर क्लिक करला परे ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन रे डाउनलोड हेकी इंस्टॉल होबा आरंभ होई जिवो। ठीक अछि। एंड जतबेले आपन इंस्टॉलेशन करि सारबे तापरे कोन हेबे ना आपन एप्लीकेशन रे ओपन करिवे। एप्लीकेशन रे जतबेले ओपन करिवे ततबेले कोन रहइबो ना सेतबेले आपनकर जो रहिछि हला कोन कहले जो वाला एप्लीकेशन इंटरफेस रही से इंटरफेस को एक्सेस करिया पूर्व आपन सब प्रथम देखिबा वाला कोन ना लॉगिन ला परे तापरे कोन हबो ना तापरे आपन लॉगिन करि सारला परे तापरे आपन को जिंस कोन विजिबल हो देखंतु ना तापरे आपन को प्ले स्टोर हमर जो स्टोर रही आउ सब अलग अलग सब सेक्शन अछि से सब आपन को विजिबल हो। आपन को करबे ना स्टोर सेक्शन को जिबे। एंड स्टोर सेक्शन में गला परे आपन को करेंटली चलतवा जते भी एप्लीकेशन हमर जो कोर्सेस अछि एप्लीकेशन रे ता आपन को विजिबल हो जिवो। तो बर्तमान कौन करिवे ना आपन को जो विजिबल हला एप्लीकेशन कोर्सेस बर्तमान ता भीतर हला कोन ना आपन को कोर्स नवा चाहछन्ती ता आपन परचेज कर परिबे। करेंटली हमरो रेलवे बैंकिंग एसएससी एंड स्टेट रे जितकी सब एग्जामिनेशन अछि ओएसएससी ओट्रिपलएससी ओटीईटी बीएड ए सब हला जो आपन को ये रहिछि ए सब जिंस गुडा को आपन को कोन ना विजिबल है जिवो। ठीक अछि। तो बर्तमान आपन कोन करिवे ना आपन परचेज ऊपर जिबे। परचेज ऊपर जेतले जिबे आपन को प्राइस देखबो कोन ना 2999 बर्तमान पे प्राइस अछि 2999 बट ए प्राइस हला कोन ना इंक्रीज हेई पारे। ठीक अछि। बट ए प्राइस कोन हेई पारे ना इंक्रीज हेई पारे। तो तेणु करी आपण कोन करिवे ना आपण इंक्रीज जो हेई पारे तेणु करी आपण कोन करिवे एठी ना तांकरे आपण एठी हला कोन ना प्राइस ताको जो इंक्रीज आपण देखुजन ना से इंक्रीज हबा आगरु आपण कोन करिवे ना परचेज करनेबे जादरा कि कोन होबो ना आपण को जो जो प्राइस आपण माने कोन कहले जो प्राइस रे आपण पाइबा कथा से प्राइस से पाई परबे। जदि आपण कोन करिवे ना सेही समय अवधि मध्ये जदि से प्राइस टिको आपण अवेल न करन ताले कोन हो ना पर मुहूर्त रे प्राइस टिके बढ़ जाय पारे। तो तेणु करी आपण आज ही को जाके डाउनलोड करके आपण को करंतु ना हां करंतु हला एक्सेस करंतु। एंड आपण हला कोन ना ए 2999 प्राइस डायरेक्ट दे देबेनी आपण DEB10 कूपन कोड यूज कर देबे जहां कि आपण को एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जो यानी कि 2699 प्राइस आपण को हे जो ए 2999 प्राइस टी कमी। ठीक अछि। सो आज ही जानतो एंड आपण को प्रिपरेशन आरंभ करू। हमरो एप्लीकेशन आपन को वीडियो लेक्चर क्लासेस रो वीडियो मिलिबो आउ ता से काला कोन आपन को लाइव ऑनलाइन क्लासेस हैला ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैला ई बुक मैगजीन्स एंड नॉलेज ऑन एंड तो बहुत सारे जिंस आपन को फैसिलिटी मिलिबो तन करे आपन मैट्रिक्स डिजिटल लाइव आपको प्रॉपर्ली जाके डाउनलोड करके प्रिपरेशन कर परिबे। आपन एप्लीकेशन रे दुईटी जिंस फ्री ऑफ कॉस्ट रे मध्ये अवेलेबल अछि। गोटे हैला आपन को जो मेमोरी कोर्स रहिला आ गोटे हैला कोन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स रहिला ए दुईटी कोर्स आपन को फ्री ऑफ कॉस्ट रे मध्ये अवेलेबल अछि जहां कि कोन आपन फ्री ऑफ कॉस्ट रे आपको एक्सेस कर परिबे। कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स रे आपन को सर्टिफिकेशन कोर्स मिलियो जदि आपन 1 रुपीस सब्सक्रिप्शन नउछथि एंड गोटे मंथ यूज करछथि। ठीक अछि। एंड मेमोरी टेक्निक कोर्स कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट अछि। एंड एथरे हला आपन कोन ना आपन को ब्रेन को केमते फास्टर कर परिबे आपन कोनोसी प्रॉब्लम जतबे सॉल्व करछन केमते जल्दी जल्दी सॉल्व कर परिबे से सब तमाम जानकारी आपन को एथरे मिलिबो। ठीक अछि। तो आज ही आपन एप्लीकेशन रो ट्राई करंतु। एंड आपन किसी डाउट अछि क्वेरीज अछि तो मोर सोशल मीडिया हैंडल जो अछि सेटा आपन मते पचारि परिबे। आपन को किसी डाउट क्वेरीज जति अछि ता आपन मते पचारि परिबे।
ठीक अच्छे एंड आपण हला मो सहित टेलीग्राम द्वारा मध्ये जॉइन हे परिबे जहां कि हला कोन ना आपण को जो पीडीएफ्स अच्छी नोट्स अच्छी ये सब जिन गुड़ाक कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाए ठीक अच्छे तो आज ही जातु एंड जॉइन कर नियंतु जहाँ कि आपको काफी इंपोर्टेंट कीमती जो नोट्स अच्छी फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर पारे ठीक अच्छे तो लेट्स स्टार्ट द सेशन सो आज सेशन रे हमरो प्रथम क्वेश्चन आपन पाखरे एटी रहला 51 question 51st question so the chairman and member of state public service commission are appointed by हमर जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन ता कहा द्वारा अपॉइंट होती प्रेसिडेंट ना चेयरमैन ऑफ यूपीएससी ना हमर गवर्नर ना प्राइम मिनिस्टर फटाफट समस्त कमेंट कर देंगे जो कमेंट फास्ट जिते फास्ट पढ़ते जल्दी जल्दी कमेंट करंतु जहां कि आम सेशन टी को काफी फास्ट चलै परिबा ठीक अछि एंड आउ बहुत सारा क्वेश्चन अल्प समय मध्य डिस्कशन कर पारे इट इज अप टू यू कि आपण केते फास्ट आंसर करछन ठीक अछि तो करेक्ट आंसर एडी कोन आइबो करेक्ट आंसर आइबो आपनकर ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर ठीक अछि सो प्राइम मिनिस्टर जे हला कोन अपॉइंट कर दे कोन जो चेयरमैन हमरो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन रो आ हला कोन ना तार मेंबर्स मान को मध्ये से अपॉइंट करंती के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करंती ठीक अछि नेक्स्ट when a state governor dies or resigns who normally uh, exercises his functions till a new governor is appointed option a chief justice of high court option b advocate general of state option c secretary general of governor of the governor and option d a person designated by the state cabinet बताओ बताओ जल्दी जल्दी आंसर बताओ दो कमेंट फास्ट फास्ट ओके करेक्ट आंसर कोन हिजबो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हिजबो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ठीक अछि जदि स्टेट गवर्नर कर डेथ हे जाय किबा जो से रिजाइन दे दियंती हला ताले हला कोन ना नॉर्मली के तांको फंक्शन ये करबे ना हमर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हमर हला कोन करबे ना ताको ये करबे ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 53 when a financial emergency is proclaimed केतेबेले हमरो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करा जाय ऑप्शन ए यूनियन बजट विल नॉट बी प्रेजेंटेड ऑप्शन बी सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एनी क्लास of employees may be reduced. Option C, repayment of government debts will stop. And option D, payment of salaries to public servant will be postponed. बताओ 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 समस्त आंसर बताओ जल्दी यस एनीवन आंसर कर परिबो करेक्ट आंसर कोन हिजबो करेक्ट आंसर हिजबो हमरो ऑप्शन बी ठीक अछि salaries and allowances of any class of employees may be reduced ठीक अछि जदि फाइनेंशियल इमरजेंसी आसे ताले ऑन दैट केस हमें कोन करू ना हमर जो हला सैलरीज अछि आ अलाउंसेस अछि ना कोनोसी क्लास रो एम्प्लॉय भी अगर कोन कर दिया जे ना रिड्यूस कर दिया जे ठीक अछि सो राइट आंसर इट कोन हिजबो ना राइट आंसर हमर हिजबो ऑप्शन बी हिजबो ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करो who appoints the chairman of the UPSC? UPSC रो chairman को क्या appoint करते? Option A president, option B speaker of Lok Sabha, option C chief justice of India and option D prime minister. बताना बताना जल्दी जल्दी आंसर बताना तो करेक्ट आंसर कौन है जीवो जल्दी जल्दी आंसर बताना समझते करेक्ट आंसर कौन है जीवो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ठीक अच्छे प्रेसिडेंट आपणकर अपॉइंट करती कौन ना आमर यूपीएससी रो चेयरमैन को नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करंतु
Question number 55. Which of the following is correct regarding the governor of a state? ଆମର जो हला गवर्नर ऑफ स्टेट को रिगार्डिंग कोटा ठीक अछि. ऑप्शन ए all of the below. Option B he can recommend to the president to impose president's rule in the state. Option C no money bill can be introduced in the state legislature without his prior permission. And option D he has the power of issuing ordinance when the legislature is not in session. बताओ बताओ समस्त आंसर बताओ करेक्ट आंसर कौन है डू कमेंट फास्ट यस करेक्ट आंसर कौन है ऑप्शन ए ठीक अछि ऑल ऑफ द बिल he can recommend the president to impose president's rule in the state किंबा हला तांकर हला कोन no money bill can be introduced in the state legislature without his prior permission and he has the power of issuing ordinance when legislature not in session. All are correct. ठीक अछि governor of a state को perspective जहाँ भी statement दिया है all are correct. Next answer करो. If the president wants to resign from office he may do so by writing to the कहा को लिखित से हला ये कर पाइबा. ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोक सभा, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट. बताओ बताओ जल्दी जल्दी आंसर बताओ करेक्ट आंसर कौन है यस करेक्ट आंसर कौन है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक अच्छे वाइस प्रेसिडेंट. ठीक अच्छे जदि प्रेसिडेंट चाहूचंती रिजाइन करिवे से ताले काहाको देबे तांको रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देबे. नेक्स्ट is the prime minister bound to advise is sought हला. ऑप्शन ए yes if council of ministers so desires, option B yes, option C no, option D it is discretionary. बताओ बताओ चलिए आंसर बताओ. यस करेक्ट आंसर कौन है ऑप्शन बी यस हला. हमरो जो हला कोन प्राइम मिनिस्टर जो हला एडवाइस अछंती ताको हला कोन मानिबा को पड़िबो. ठीक अछि सो हला कोन यस ऑप्शन बी यस. नेक्स्ट question number 58. The 5-year term of the president is calculated from the तांकर जो 5-year term जो अछि calculate केबेट करा जाय. Option A first day of the month of the following the month of he assumes charge. Option B date of his election result. Option C day he assumes charge. Option D first day of the month he assumes charge. कौन अब आंसर बताओ पिला माने जल्दी जल्दी. यस करेक्ट आंसर कौन है ऑप्शन सी हैला डे ही अज्यूम्स चार्ज जेबेठु से हैला कोन ना तांकर कार्यभार संभाळंती ता परठु ही कोन हे जाय ना ता परठु ही तांकर हैला कोन ना टर्म ता काउंट होबा स्टार्ट हे जाय. ठीक अछि सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी हैला. ऑप्शन सी हमर करेक्ट आंसर. ओके चलो नेक्स्ट. Who is the ex officio chairman of the Council of States? हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स रो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के. ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी स्पीकर. यस बताओ बताओ समझते जल्दी जल्दी करेक्ट आंसर बताओ. करेक्ट आंसर कौन है राइट आंसर इज ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट. ठीक अच्छे वाइस प्रेसिडेंट जे से एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैला. चलो
नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 60 under which article of the constitution is the president's rule promulgated to any state in India? Option A article 326, option B article 370, option C article 380 and option D article 356. को आर्टिकल अंडर रे कॉन्स्टिट्यूशन जो हला कॉन्स्टिट्यूशन को होची ना प्रेसिडेंट रूल प्रोमोगेट हबो स्टेट रे वो माने स्टेट इमरजेंसी लागिबो यस कोन करेक्ट आंसर हिजबो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी 356 ठीक अछि तो आर्टिकल 356 जो अछि आर्टिकल 356 अंडर द स्टेट रे जो इमरजेंसी लागी ठीक अछि तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 356 नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 61 at a time president's rule can be imposed on a state for a maximum period of गोटे स्टेट ऊपर जेतेबेले हमर इमरजेंसी लागे बा प्रेसिडेंट रूल लागे सेतेबेले कोन ना केते टाइम पीरियड पई लागे at a time थरो करे केते टाइम माने एकाथ थर कर जे मन इच्छा लगे दे परियो ऑप्शन ए 1 ईयर ऑप्शन बी 5 years ऑप्शन सी 2 years एंड ऑप्शन डी 4 years केते टाइम पई लागे at a time थरे लगेबो जदी प्रेसिडेंट्स रूल तुम जदी स्टेट लगेबो त केते टाइम पे लागिबो गोटे वर्ष पय लागि परिबो हला तापर पर हला कोन एक्सटेंड करा जिवो किंतु फास्ट लागिबो वाले मैक्सिमम गोटे वर्ष पर्यंत लागि परिबो ता अधिक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया इज द हमर जो चेयरमैन अछन प्लानिंग कमीशन जो इंडिया रो से कोन प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर ना मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग ना फाइनेंस मिनिस्टर बताओ जल्दी पिला माने प्लानिंग कमीशन चेयरमैन के प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर ना हमर हला होची मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग ना फाइनेंस मिनिस्टर यस करेक्ट आंसर कोन हिजबो राइट आंसर इज अवर हियर ऑप्शन ए ठीक अछि प्रेसिडेंट जे से हला कोन चेयरमैन हमर कोन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ओके चलो नेक्स्ट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 63 when president is not in session the president can promulgate an ordinance which is to be ratified by the parliament within option A 6 weeks from the resembling of the parliament reassembly of the parliament option B 6 months from the reassembly of the parliament ठीक है 6 weeks लाटे 6 month तापरे option C रहले कोन 6 weeks from the date of issue of ordinance and option D हला 3 months from the date of issue of the ordinance बताओ समझते जल्दी जल्दी आंसर बताओ yes correct answer कोन हिजबो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ठीक अछि हमरा हला कोन पार्लियामेंट जेतबे सेशन न थाए प्रेसिडेंट सेतबे कोन कोन ऑर्डिनेंस पारित करथाने जेतबे सेशन रिज्यूम होबो सेतबे कोन होबो तार 6 वीक भीतर हला कोन पार्लियामेंट रो ताको अप्रूव करिया पड़ो ताले देखि से हला रूल बनि के रहि परिबो नल हला कोन हिजबो ना से ऑटोमेटिक टर्मिनेट हिजबो हला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 The President of India is elected by an electoral college comprising of जो electoral college जो हला जहाँ तक president elect होने से क्या था option A elected members of Lok Sabha and State Legislative Assembly option B elected members of both the houses of the Parliament and State Legislative Assembly option C elected members of both houses of Parliament option D elected members of State Legislative Assemblies यस करेक्ट आंसर कोन हिजबो बताओ जल्दी आंसर बताओ यस करेक्ट आंसर कोन हिजबो ऑप्शन बी एटा मु बतैतली या पूर्व सेशन रे भी मु बतैतली हला जोते कि हला कोन ना जो इलेक्टेड मेंबर अछंती हमर दीटा हाउस रो पार्लियामेंट रो सेमन तो रहिबे तास तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर रहिबे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो रछि सेमन रहिबे ठीक अछि तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हिजबो नेक्स्ट Question number 65 if the office of the president of India falls vacant
within what time should the next president be elected? जदि हला कोन ना हमर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस जदि वैकेंट हो जाए ताले हला कोन ना केते टाइम भीतर पुणी प्रेसिडेंट इलेक्ट हेबे विदिन 2 मंथ्स विदिन 1 ईयर विदिन 6 मंथ एंड ऑप्शन डी इमीडिएटली केते टाइम पीरियड भीतर पुणी प्रेसिडेंट इलेक्ट हबा 2 मास ना वर्षे ना 6 मास ना संगे संगे yes correct answer कोन हिजिबो right answer is option C within 6 months 6 month भीतर presidential election होबा again पुणी हम नुवा प्रेसिडेंट हला कोन हेबे elect हेबे next question number 66 the president can proclaim a state of emergency in case of state of emergency केतबेला हला proclaim करबे president option A all of the below that is option B रे कोन दिया ना threat to financial stability of the country option C external aggression or internal disturbances threatening the security of the country option D failure of constitution machinery in a particular state केतबेला लागि परिबो state emergency yes all of the below ठीक अछि एटा मु कहितले आपन को जतबेला प्रेसिडेंशियल पावर पढैतली सेतला इमरजेंसी पढैतली सेतला कहितली जेला कोन ना देशर कोन जगह जदि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होची ताले से जगह भी हला इमरजेंसी लागिवो एक्सटर्नल एग्रेशन कि इंटरनल डिस्टर्बेंस होची जदि आर्म्ड रिबेलियन जो कोन हला सी जिंस हला कोन ताले भी हबो एंड हला कोन कोन जगह कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी अछि से फेलियर हेतले कोन स्टेट ताले सेट भी हम स्टेट इमरजेंसी लागिवो नेक्स्ट question number 67 in the election of the president the value of a vote of Lok Sabha members option A differs according to the geographical size of the respective state option B none of these option C differs according to the number of votes a member represents and option D is same बताओ तो पिला माने जल्दी आंसर बताओ करेक्ट आंसर कोन हिजबो करेक्ट आंसर हिजबो हमरा ऑप्शन सी differs according to the number of votes a member represent ठीक अछि गोटे मेंबर टा केते वोट को रिप्रेजेंट करछे सेटा हिसाब रे कोन हबो ना सेटा जिंसटा वेरी करबो ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताओ the Indian president is option A none of these option B titular exercise option C real exercise and option D real titular exercise जल्दी बताओ आंसर लेवने करेक्ट आंसर कोन हिजिबो ऑप्शन बी टिटुलर एक्सरसाइज ठीक अछि तापरे नेक्स्ट the minimum age required for becoming the prime minister of India is option A 30 years option B 35 years option C 40 years and option D 25 years जल्दी जल्दी समझते आंसर बताओ yes correct answer कोन हिजिबो correct answer is option D 25 years ठीक अछि correct answer is 25 years केते टाइम दरकार को 25 years दरकार ठीक अछि मिनिमम एज केते दरकार 25 years दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 the president may for violation of the constitution be removed from the office by option A prime minister option B the electoral college consisting of members of parliament and state legislature option C impeachment and option D a no confidence vote बताओ करेक्ट आंसर कोन हिजिबो यस राइट आंसर कोन हबो
राइट आंसर इज ऑप्शन सी इम्पीचमेंट ठीक अच्छे प्रेसिडेंट को रिमूव करने आम कौन हुए इम्पीचमेंट होता है ठीक अच्छे सो राइट आंसर इज हियर इम्पीचमेंट हेगला अच्छा नेक्स्ट in which of the following situation does the president act in his own discretion ए भी तो को सिचुएशन रे प्रेसिडेंट हला कोन ताकर ओन डिस्क्रिप्शन रे काम करन ऑप्शन ए in returning a proposal to council of minister for consideration option b none of these option c in appointing the prime minister option d both a and c बता बता करेक्ट आंसर कौन है जीवो यस राइट आंसर इज ऑप्शन ए ठीक अछि जते बेले हला कोन ता रिटर्निंग द प्रपोजल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसीडरेशन हला तो सेते बेले हला कोन हो ना हम जो कहलन कि हमर जो प्रेसिडेंट ताकर जो एक्ट अछि ताकर डिस्क्रिप्शनल पावर केते बेले यूज करिवे ना जते बेले से रिटर्न करिवे हला कोन ना ताकर मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ताकर कोनोसी प्रपोजल सब दिजन ताको रिटर्न करिवे ऑन दैट केस ठीक अछि तो राइट आंसर एटी कोन हिजबो ना राइट आंसर हमर हिजबो ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 the prime minister union cabinet minister chief minister and council of ministers are all members of एमाने समस्त कहार मेंबर हेतान ऑप्शन ए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑप्शन बी रीजनल काउंसिल ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन एंड ऑप्शन डी जोनल काउंसिल बताओ बताओ जल्दी आंसर बताओ यस करेक्ट आंसर कौन है करेक्ट आंसर है हमर ऑप्शन ए ठीक अच्छे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये जो प्राइम मिनिस्टर है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है चीफ मिनिस्टर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कौन होता मेंबर्स होता ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट आंसर बताओ the president's rule in a state means that the state is ruled by president rule गोटे स्टेट रे जदी हला माने अप्लाई हला तने से स्टेट ता कहा द्वारा रूल हो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन समस्त जान रखिया निहाती दरकार प्रेसिडेंट रूल गोटे स्टेट लाग जे कहा द्वारा रूल हो ऑप्शन ए केयर टेकर गवर्नमेंट ए ऑप्शन बी द चीफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट option C the governor of the state and option D president directly बताओ बताओ करेक्ट आंसर कौन है समस्त तो जानी थी वो हला प्रेसिडेंट्स रूल लगले माने किए हला एक्चुअली स्टेट को गवर्न कर फिर भी हम क्वेश्चन पचार आ बहुत हला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक अछि एइते बहुत जन पिलांकर हला कोन ना क्लैरिटी न था जे एक्चुअली माने जिंसटा एक्चुअली कोन बोल ठीक अछि प्रेसिडेंट रूल माने कौन केयरटेकर गवर्नमेंट माने समस्त जानछो केयरटेकर गवर्नमेंट माने कौन केयरटेकर गवर्नमेंट माने गोटे हला कोन कहलो गवर्नमेंट कोलैप्स कर देछि तो वर्तमान हला कोन ना गोटे एमिति का गवर्नमेंट बनाइछि जोटा कि टेम्पररी गवर्नमेंट हला तो टेम्पररी गवर्नमेंट को कोन हला केयरटेकर गवर्नमेंट हला माने तसे कोनोसी प्रकार इलेक्ट नाही कि कोनोसी ये नाही हला टेम्पररी गवर्नमेंट ताको अपॉइंट कराइछि पर्टिकुलरली हला कोन ना वर्तमान हला जेपन एक्चुअल गवर्नमेंट न बनिछि सेपन हला कोन ना से काम करियो बोली नेक्स्ट है कौन ना द चीफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट हला प्रेसिडेंट बर्तमान चीफ मिनिस्टर स्टेट पई नॉमिनेट करिवे ठीक अछि एटा गोटे सिचुएशन रहला आ गोटे जिंस रहला कोन ना आ गोटे जिंस रहला कोन ना गवर्नर ऑफ द स्टेट रो जे गवर्नर हला से हला कोन करिवे ना रूल करिवे ना हमर प्रेसिडेंट डायरेक्टली आके रूल करिवे करेक्ट आंसर कोन हिजबो वेरी सिंपल ऑप्शन सी डेफिनेटली हमर जेहेतु वाला गवर्नर जेहेतु वाला गोटे प्रकार गवर्नमेंट रो एजेंट तेनकरी से ही डेफिनेटली कोन करिवे ना रूल करिवे ठीक अछि तो राइट आंसर कोन हिजबो हमरो एठी ऑप्शन सी एठी करेक्ट आंसर हिजबो ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी whenever such a setup exists is appointed by बेले बेले गोटे पर्टिकुलर सिचुएशन अछि जोथि कि अपॉइंटमेंट करिया पड़े ताले की अपॉइंट करथि ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट गवर्नर
Option B, the majority party in the legislature. Option C, the president, and option D, the prime minister. बताओ बताओ समझते जल्दी जल्दी बताओ करेक्ट आंसर कौन है जीवो यस करेक्ट आंसर कौन है जीवो राइट आंसर इज ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैला जेमति का कि हमर सब स्टेट मागर गवर्नर अछंती गवर्नर जे से अपॉइंट करछन ना हो लाकी मेजॉरिटी पार्टी रो जे जाका बाछारा से ही हबो हैला किंतु अपॉइंट किए करछंती गवर्नर अपॉइंट करछन सेमति का हमर हैला जो यूनियन टेरिटरी अछि सेठी सब कोन अछंती एडमिनिस्ट्रेटर अछंती नले हैला लेफ्टिनेंट गवर्नर अछंती ठीक अछि तो वर्तमान से ताले अपॉइंट का तला एडमिनिस्ट्रेटर कथा तो देइनी नले बोथ एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर हेतांता कहना आइदर एडमिनिस्ट्रेटर थिबे नले लेफ्टिनेंट गवर्नर थिबे दी जणा को नथिबे ठीक अछि सो राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट गवर्नर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताओ 75 under what article of the Constitution of India can the president take over the administration of a state in case of a constitutional machinery breakdown जदि constitutional machinery कोन हेछि ना breakdown हे जाय ठीक अछि जदि constitutional machinery कोन हेछि ना breakdown हे जाय on that case हला कोन ना हमरा हला president जो action नेबे हला को ये अनुसार action नेबे Article 352, option B Article 343, option C Article 356 and option D Article 83. बताओ बताओ करेक्ट आंसर कौन है राइट आंसर इज ऑप्शन सी आर्टिकल 356 ठीक अछि आर्टिकल 356 जो अछि ता अंडर कोन करिवे ना हमरो जो हला ये अछि हला कोन अछि ना हमरो प्रेसिडेंट अछंती सी हला कोन ना एक्शन नेबे हला कोन जति कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन ही जाय कोन से स्टेट ठीक अछि चलो नेक्स्ट आंसर करो क्वेश्चन नंबर 76 the president can make laws through ordinances president को करबे ना ordinance द्वारा law बने परिबे ठीक अछि ऑप्शन ए only on subjects contained in the concurrent list na option B under no circumstances na option C on certain subject even when president is in session and option D during the recess of the president कौन हम करेक्ट आंसर केते बेले हला हमरो प्रेसिडेंट हला कोन करबे ना ऑर्डिनेंस पास कर परिबे केते बेले व्हेन बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन याको बहुत टाइम कोइ हला बहुत टाइम जते बेले भी मो हला जो प्रेसिडेंट पढाई छी कि बा प्रेसिडेंट रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन करछि ना सब टाइम रे कोइ छी हला केते बेले से ऑर्डिनेंस पास कर परिबे yes correct answer कोन हिजबो ऑप्शन डी ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट जते बेले पार्लियामेंट सेशन रे नथिबो सेते बेले कोन हबो ना सेते बेले प्रेसिडेंट कोनोसी जगह रे जते हला हमको ऑर्डिनेंस मन दका हला गोटे स्पेशल लॉ बनेवा पई ताले कोन ना से टेम्पररी पीरियड पई से ऑर्डिनेंस पास करके ताको लॉ बने पारि ठीक अछि किंतु परमानेंटली पुनी जते बेले हला कोन ना पार्लियामेंट सेशन को आसी जिवो त 6 मंथ भीतर पुनी अस कोन ना ताको हला कोन ना ताको अप्रूवल करके करिया पड़ियो नहले ही हबनी ठीक अछि so right answer over here is option D next question number 77 which of the following qualification not essential for a person to become the vice president ए भितर हला कोन ना को क्वालिफिकेशन कोन से आवश्यकता नै हला माने vice president हबा पे ठीक अछि option A he must be an Indian option B he must be qualified to be a member of the Rajya Sabha option C he must not be less than 35 years and option D he must be graduate yes correct answer कोन हिजबो right answer is option D ठीक अछि he must be graduate हला से निहाती ग्रेजुएट हेतिवा दरकार सेंते कोन जगह लिखाइन जे से ग्रेजुएट हेति नहीं वाइस प्रेसिडेंट हे परिबे ठीक अछि बाकी सब आंसर लिखाइ छै 35 वर्ष हेतिवा दरकार
आ हला कोन तांकर हला कोन राज्य सभा रे मेंबर हो पे क्वालिफाई हेतिबा दरकार आ हला कोन जणे सबटु इंपोर्टेंट जिंस हला प्रथम जिंस होदेला कोन इंडियन हेतिबा दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 how many types of emergency have been visualized in the constitution of India हमर constitution India रे केतेटा टाइप रो emergency विषय रे लिखा है को ऑप्शन ए 4 ऑप्शन बी 3 ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 2 बताओ केतरा टाइप रो कॉन्स्टिट्यूशन विषय रे हमर ये रे लिखा है चारटा तीनटा गोटे दीटा यस करेक्ट आंसर कोन हिजबो समस्त जानचनी ऑप्शन बी तीनटा ठीक अछि सो तीनटा टाइप रो हमर इमरजेंसी अछि गोटे हला नेशनल इमरजेंसी आ गोटे हला हमर स्टेट इमरजेंसी आ गोटे हला कोन फाइनेंशियल इमरजेंसी ठीक अछि तीनटा नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 79 the impeachment proceedings against the vice president can be initiated हमर वाइस प्रेसिडेंट कर जो हला तांको पदवी बाहर कर देबो इंपीचमेंट तो सेटा कोठु इनिशिएट हे पारे ऑप्शन ए ओनली इन लोकसभा ऑप्शन बी इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कोनसी भी हाउस रू सॉरी नाइदर हाउस ना कोनसी भी हाउस रू हला ऑप्शन सी हला इन आइदर ऑफ द हाउस कोनसी भी हाउस एंड ऑप्शन डी ओनली इन राज्य सभा यस करेक्ट आंसर कोन है जो पिलाने yes right answer is here option D only in Rajya Sabha जदि हमर वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच कर जाचे ना केबे तांकर हला कोन ना इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग आरंभ होई परियो ठीक अछि सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 who appoints the governor of Jammu and Kashmir Jammu and Kashmir governor की अपॉइंट करती chief minister of the state prime minister chief justice of high court and option D president बताओ बताओ पिलाने करेक्ट आंसर कौन है जो यस राइट आंसर कौन है जो राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ठीक अछि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हला कोन ना गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को हला लागिना सब स्टेट गवर्नर को ऑब्वियसली से ही अपॉइंट करंती ना ठीक अछि तो हला कोन ना हमर प्रेसिडेंट हला राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 the president of India can be removed from his office by the कहा द्वारा रिमूव हो पारे पार्लियामेंट ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ना लोकसभा बताओ बताओ पिला माने जल्दी जल्दी आंसर बताओ यस करेक्ट आंसर कोन हिजबो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन ए ठीक अछि पार्लियामेंट द्वारा केमितिया रिमूव हेबे इम्पीचमेंट पई गोटे हला कोन हबो ना गोटे हला कोन कोन प्रस्ताव पारित हबो एंड से प्रस्ताव रे हला कोन हबो ना ताकरो 14 डेज ताको नोटिस दिया हितो नोटिस पीरियड ठीक अछि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर पार्लियामेंट ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 if the president returns a bill sent to him for his assent and the parliament once again passes the bill in its original form then the president option A can seek the opinion of the Supreme Court option Supreme Court on the bill option B gives assent to the bill option C can once again return the bill for further reconsideration and option D can ask for referendum on the bill बताओ बताओ ठीक आंसर कौन हबो
yes correct answer is option B ठीक अछि gives assent to the bill ठीक अछि president पाखु जदि हला कोन the president returns a bill sent to him for the assent and the parliament once again passes the bill जदि आउ थरे से बिल टाको सब पास है कि ताक पुणी आथरे ये करके जाई दियाले त से समय कोन हबे ना से बाध्य हबे से बिल टाको कोन करिया पे assent करिया पे ठीक अछि so right answer is here option B next if a minister loses a no confidence motion हैला जदि कौन सी मिनिस्टर हारी जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो ताके से पाइते होते ताले कोन हबो ऑप्शन ए लोकसभा इज डिसॉल्व ऑप्शन बी ओनली प्राइम मिनिस्टर एंड दैट मिनिस्टर रिजाइन ऑप्शन सी द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस ऑप्शन डी द मिनिस्टर रिजाइंस बताओ बताओ करेक्ट आंसर कौन है राइट आंसर इज ऑप्शन सी द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन हला काहे कि ना से माने ताकर गोटे मिनिस्टर बंचाई पालेनी आउ से माने एंटायर मिसी कि कोन बंचिबे तो तनकर डेफिनेटली पूरा एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करने हला ऑप्शन सी इट करेक्ट आंसर है चलो नेक्स्ट 84 क्वेश्चन the only instance when president of India exercise his power to vote related to the केते बड़े president of India हला कोन कोन वोट दियन ऑप्शन ए इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल जेते बड़े से केस रे वोट देबे ना डाउरी प्रोहिबिशन बिल रे वोट देबे ना हिंदू कोड बिल हबो सेते वोट देबे ना हमरो पेप्सू पेप्सू रे वोट देबे को कोठी केवल एकमात्र इंस्टेंस जोते कि हला कोन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोन हबे पावर अछि वीटो करिया पे ठीक अछि सॉरी वोट करिले बोले वीटो करिया पे राइट आंसर कोन हिचबो ऑप्शन ए इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल से वीटो कर परिबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 the control of the preparation of electoral rolls for parliament and legislature vests with president na election commission na cabinet na prime minister बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ करेक्ट आंसर कौन है राइट आंसर इज ऑप्शन बी इलेक्शन कमिशन ठीक अछि सब किछि इलेक्शन कमिशन बुझे हला जो हला जति कि सब हला कोन कहलो इलेक्टोरल रोल सब अछि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 व्हाट इज contained in the 10th schedule of the constitution हमर constitution 10th schedule अछि से कोन अछि option A languages recognized by the constitution option B forms of oath and or affirmation option C laws that cannot be challenged in any court of law option D provision regarding disqualification on grounds of defection बताओ बताओ करेक्ट आंसर कोन है yes राइट आंसर कोन है ऑप्शन डी ठीक अछि प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स इलेक्शन फॉर इलेक्शन ऑप्शन कहां पे इलेक्शन होल्ड करे को ऑप्शन ए द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑप्शन बी द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज and state council and option C the parliament and option D the parliament and the state legislative assemblies कहाँ पे कंडक्ट करे को इलेक्शन कमीशन इलेक्शन यस ऑप्शन ए ठीक अछि पार्लियामेंट रे जो इलेक्शन हुए ता पई भी कंडक्ट करे स्टेट लेजिस्लेचर रे जो इलेक्शन हुए ता पई मध्ये कंडक्ट करे आला कोन ना प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे जो इलेक्शन होय ता डेट्स हला ये हला सब किछ हला कोन ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाहर करे एंड वाइस प्रेसिडेंट करे इलेक्शन भी
ठीक अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 फॉर इलेक्शन टू द लोक सभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय से जो हला कोन लोकसभा इलेक्शन पे नॉमिनेशन पेपर कादरा फाइल करा जाय परिबो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑप्शन बी एनी सिटीजन ऑफ इंडिया whose name appears in the electoral roll of the constituency and option C anyone residing in India and option D a resident of the constituency from which the election to be contested ओके करेक्ट आंसर कौन है करेक्ट जार ना कि कौन थी इलेक्टोरल रोल रे मेंशन थी कॉन्स्टिट्यूएंसी ठीक अच्छे से हला कौन ना हम लोकसभा इलेक्शन में छिड़ा पारि ठीक अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन रिकॉग्निशन बाय इंडिया रे पॉलिटिकल पार्टी मान को किए रिकॉग्निशन दी ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन ऑप्शन बी स्पीकर ऑप्शन सी प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी लॉ कमीशन बताओ 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 करेक्ट आंसर कौन है यस राइट आंसर कौन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक अच्छे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रिकॉग्नाइजेशन दिए क्या ना हमरो जेतिके सब हला कोन ना पॉलिटिकल पार्टीज गुडा को अछि ठीक अछि सो राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन ए हला। चलो नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 90 the vice president is elected by an electoral college consisting of the members of option A both houses of parliament and state legislature option B both houses of parliament option C lok sabha and option D rajya sabha बताओ बताओ जल्दी जल्दी आंसर बताओ करेक्ट आंसर कौन हो पिला माने yes right answer is option B both houses of the parliament ठीक अछि right answer is option B both houses of the parliament ठीक अछि हाँ next बताओ question number 91 the election commission doesn't conduct the election to the election commission कहार election conduct करनी लोकसभा रो ना president का election रो ना राज्यसभा रो ना local bodies रो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन अछि ठीक है ये क्वेश्चन ना बहुत टाइम रे एग्जाम रे देखिया मर चला कार इलेक्शन कंडक्ट करे नाही हला समस्त जानि छन हला इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कार कार इलेक्शन कंडक्ट करे किंतु कार कार कंडक्ट करे ना एटा बहुत कम पिला जानि छन ठीक अछि यस करेक्ट आंसर कोन हिजबो राइट आंसर इज ऑप्शन डी हला करेन ठीक अछि हाँ ये जो लोकल बॉडीज गुड़ा कहला पंचायत इलेक्शन ये कहला सेटा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ये कंडक्ट करेंगे नेक्स्ट 92 the maximum age prescribed for the election of the president is presidential election में maximum age कितने prescribe करा छी no such limit ना 62 years ना 58 years ना 60 years बताओ बताओ करेक्ट आंसर कौन है जीवो यस राइट आंसर कौन है राइट आंसर इज ऑफिकी लिमिट रहिबो हमर बोली हला जे प्रेसिडेंट करा बयस एतकी मैक्सिमम हेतो ताठो अधिका हले से इलेक्शन लड़ी परिबे नाही बोली ठीक अछि सेंदा कोन सेंस मेंशन नाही तो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 the power to option is vested in option A high court option B election commission option C parliament and option D supreme court
राइट आंसर कोन हिजबो यस राइट आंसर इज ऑप्शन बी ठीक अछि राइट आंसर इज ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन हे गला चलो नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 94 to elect the president of India which one of the following election procedure is used हमर हला कोन ना जो प्रेसिडेंट हमर इंडिया रे जो इलेक्ट होती को ए भी तो को प्रोसीजर हला हमर हला कोन चूज करता ऑप्शन ए system of proportional representation by means of the single transferable vote option b secondary voting system ठीक अछि and option c proportional representation through list system and option d collective voting system yes right answer is option a ठीक अछि proportional representation by means of a single transferable vote ता विषय में ऑलरेडी तुमको जतला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विषय कहइतली सेठी मेंशन करतली ठीक अछि सो राइट आंसर कोन हिजबो राइट आंसर हिजबो हमर ऑप्शन ए ओके चलो नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 95 इन व्हिच ईयर were the first general election held in India को वर्ष हमर फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया रे हितला ऑप्शन ए 1950 to 51 ऑप्शन बी 1948 to 49 ऑप्शन सी 1951 to 52 and ऑप्शन डी 1947 to 48 बताओ को वर्ष वाला कोन ना हमर जनरल इलेक्शन फर्स्ट टाइम पे हितला राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1951 रो 52 पर्यंत हमर फर्स्ट जनरल इलेक्शन हितला ठीक अछि सो 1950 रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन हला इनेक्ट हला तापर 1951 रो हमर कोन चलला ना इलेक्शन चलला ठीक अछि सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 election to the House of the People acted on option B proportional representation option C limited suffrage and option D adult franchise कौन राइट आंसर अब हमर जो हाउस ऑफ पीपल अछि माने लोकसभा कथा कहछ आउ लेजिस्लेटिव असेंबली कथा कहछ ए दिटा जाकर केमिति का हुए वोटिंग ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अडल्ट फ्रेंचाइज ठीक अछि अडल्ट फ्रेंचाइज ये रे हम कोन हुए ना हुए माने 18 वर्ष रो अधिक आइतिबो ताले हले कोन ना डायरेक्टली तमे हले कोन ना तमरो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रजिस्टर आइतिबो ताको हले कोन वोट दे पारि ठीक अछि सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी हियर ठीक अछि राइट आंसर कोन हिजबो ऑप्शन डी हिजबो हमरो राइट आंसर ठीक अछि अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 ठीक अछि हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी पार्लियामेंट क्या अपॉइंट कर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को ये भी हम कहतली राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ठीक अछि प्रेसिडेंट जीएस या कोन ना हमर अपॉइंट करती चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को ठीक अछि सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी ठीक अछि चलो नेक्स्ट बताओ which among the following is not a part of electoral reform ए भितर कोटा पार्ट नुहे electoral reform रो ऑप्शन ए installation of electronic voting machines option b appointment of election commissioner option c registration of political parties option d disqualifying the offenders कोटा करेक्ट आंसर अब को इलेक्टोरल रिफॉर्म रो कोटा पार्ट नुहे which is not part of electoral reform कोटा पार्ट नुहे इलेक्टोरल रिफॉर्म रो मत जल्दी से आंसर करो yes correct answer कोन हिजबो राइट आंसर इज ऑप्शन
ए इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जो है ईवीएम इंस्टॉल करबा इलेक्टोरल रिफॉर्म रो पार्ट नुहे ठीक अछि सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट 99 क्वेश्चन जो माने लाइक देखुछन फटाफट मते लाइक दे दियंतु ठीक अछि काहे ना 99th क्वेश्चन पहुंचलाने आ लास्ट आ गुटे मात्र क्वेश्चन तबरे हला हमरो इस सेशन टी कंप्लीट हे जो डू लाइक समस्त लाइक कर दे जल्दी ओके 99 क्वेश्चन कौन देची रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डेड बाय रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कहा द्वारा अकॉर्ड हुए को ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन ऑप्शन बी कमिटी ऑफ ऑप्शन सी द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स होगा पार्लियामेंट अफेयर्स FAIRS सॉरी FAIRS ठीक है तापर हला कोन ऑप्शन डी रहला कोन द स्पीकर ऑफ लोक सभा इन केस ऑफ नेशनल पार्टीज एंड स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन केस ऑफ रीजनल पार्टी देखो सिंपल आंसर अछि राइट आंसर इज ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन ठीक अछि पॉलिटिकल पार्टी मान को रिकॉग्निशन दबा अब क्या भी कोर्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज so 100 question kon deji na the chief minister of a state in India is not eligible to vote in the presidential election if जब chief minister गोटे state रो eligible हेबेनी presidential election vote दबा पई जदी कोन reason नै थाइबे he is a member of upper house of the state legislature option B he is caretaker chief minister option C he himself is a candidate and option D he is yet to prove his majority on the floor of the lower house of the state legislature ठीक अछि करेक्ट आंसर कोन हेजिबो ऑप्शन ए हेजिबो ठीक अछि he is member of upper house of the state legislature upper house कहले माने कोन ना हमरो MLC member of legislative council हला सेतरे जदी मेंबर हेतिबा चीफ मिनिस्टर हेतिबे ताले से वोट दे परिबे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन काहे ना सेटा अलाउ नै परे ठीक अछि सो यार सहित हमर 100th क्वेश्चन कंप्लीट हैला आई होप आपको सेशन डी भल लागतो सेशन डी यदि भल लागतो त डेफिनेटली लाइक करिवे कमेंट करिवे एंड शेयर करिवे एंड मैट्रिक्स डिजिटल लाइव आपको डाउनलोड करके अपना प्रॉपर्ली प्रिपरेशन पर बसकी करंतो जादरा के आपनको काफी बेनिफिट मिलबो एंड आपन DEB10 कूपन कोड यूज कर देबे जहां भी अपना कोर्सेज परचेज करिवे जादरा के आपनको 10% डिस्काउंट मिल जबो ठीक अछि करेंटली हमर जो रेलवे बैंकिंग SSC आउ हला जो स्टेट एग्जामिनेशन अछि तार कॉम्बो कोर्स चलछि तार सेथरे प्राइस अछि 2999 आपण से 2999 प्राइस को रिड्यूस कर परबे DEB10 कूपन कोड यूज करके 2699 प्राइस को ठीक अछि तो आज ही डाउनलोड करके प्रिपरेशन करंतु एंड सेशन डी यदि भल लागतो तने डेफिनेटली लाइक करिवे कमेंट करिवे शेयर करिवे आउ जदी सेशन में नुवा अछंती तने डेफिनेटली सेशन टी को हमरो जो चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे एंड बेल आइकन निहाती देबे धन्यवाद शुभ रात्रि।